protein is over, vitamin is over. We are discussing the nucleic acid. In nucleic acid, yesterday we had discussed the definition. Then after its monomer, component of its monomer, that is nucleotide, pentose sugar, nitrogenous base, phosphate molecule. In pentose sugar, both the types of sugar with structure we have seen. Then nitrogenous bases, we have seen all the 5 types of nitrogenous bases. Then after nucleoside and nucleotide, and I had give one new name here, that is N-glycosidic linkage. N-glycosidic linkage. So remember this, which bond is present between the nitrogenous base and first carbon of pentose sugar, that is N-glycosidic linkage. N-glycosidic linkage. Now, another information. Yesterday I informed you nucleoside and nucleotide. When nitrogenous base and pentose sugar are attached, then form nucleoside. And when nitrogenous base, pentose sugar, and phosphate molecule are attached, then that is called nucleotide. So in the base, the bond is there, and glycoside bond is present between pentose sugar fifth carbon and phosphate molecule. पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, बाय विच बॉन्ड? पहला तो है कि बाय विच कार्बन द फॉस्फेट मॉलिक्यूल कम्स इन अटैच, दैट इज फिफ्थ कार्बन. बाय विच बॉन्ड फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच विद द फिफ्थ कार्बन, किस बॉन्ड से अटैच रहता है? सो सी द नेम ऑफ दिस बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर. Phosphoester bond. Phosphoester bond. So which bond is help to bind phosphate molecule and fifth carbon of pentose sugar, that is phosphoester bond. Phosphoester bond, remember this. So in a nucleoside, N-glycosidic bond is present between the pentose sugar first carbon and nitrogenous base. And in nucleotide, 2 bonds are present. One bond is present between pentose sugar and nitrogenous base, that is N-glycosidic linkage, and one bond is present between phosphate molecule and fifth carbon, that is phosphoester bond. Now the formation of nucleic acid. अब न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो सी, this is one nucleotide, this is another nucleotide. So as I informed you कि nucleic acid is the polymer of nucleotide. So as like in protein, amino acids are combined back to back to form a long chain. So in this, nucleic acid will be combined to form a chain, and that chain will be called nucleic acid. ठीक है. नाउ सी हियर, इस तरह से न्यूक्लिक एसिड आपस में कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ चेन. दैट चेन इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. जैसे प्रोटीन में कहा गया था पॉलीपेप्टाइड चेन, हियर इट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विल कन्वर्ट इनटू न्यूक्लिक एसिड. नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि which bond is help to connect to nucleotide. दो न्यूक्लियोटाइड को कौन सा बॉन्ड कनेक्ट करता है? न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्ट टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड. सो विच बॉन्ड इज कनेक्ट द टू न्यूक्लियोटाइड को कौन सा बॉन्ड कनेक्ट करता है? द नेम ऑफ द बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो फिर से पूरा इंफॉर्मेशन,
first of all we have sugar, पेंटोस सुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड हुआ, देन इट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, देन न्यूक्लियोस अटैच हुआ फॉस्फेट मॉलिक्यूल, then it form nucleotide and nucleotides are attached back to back to form polynucleotide chain, and that polynucleotide chain are convert into nucleic acid. So which bond is present between pentose sugar and nitrogenous base and glycosidic linkage? Which bond is present between the phosphate molecule and pentose sugar? That is phosphoester bond. And which bond is present between two nucleotide to form the chain? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? Then that is phosphodiester. So see, now you have the 4-5 bond. One bond is glycosidic linkage. So glycosidic linkage was present between two monosaccharide in carbohydrates. Second was there, that is peptide linkage. Peptide linkage is present between two amino acid in proteins. Third was there, that is N-glycosidic linkage. N-glycosidic linkage is present between the first carbon of pentose sugar and any one nitrogenous base. Next was there, that is phosphoester bond. So phosphoester bond is present between the fifth carbon of pentose sugar and phosphate molecule. Now another is here phosphodiester bond. So phosphodiester bond is present between two nucleotide. दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है टू कनेक्ट देम, उनको कनेक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. इन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाउ, जैसे आपने देखा कि इन कार्बोहाइड्रेट द two carbons are attached with each other to form the glycosidic linkage C1, C2, C1, C4 जो भी था. Then in amino acid you have seen carboxylic acid of one amino acid and amine group of another amino acid. Now here, how the connection is takes place of two nucleotides. दो nucleotides आपस में connect कैसे होते हैं? Then see, the phosphate molecule of second nucleotide, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, phosphate molecule of second nucleotide attach with the third carbon of pentose sugar of previous nucleotide. जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है इसका न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से अटैच रहता है, प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस सुगर के थर्ड कार्बन से अटैच रहता है. सो सी once again how the nucleotides are connect together to the formation of phosphodiester. In this bond formation, the phosphate molecule of second nucleotide attach with the third carbon of pentose sugar of previous nucleotide to form the phosphodiester bond. In this way, the next nucleotide, phosphate molecule of next nucleotide will be attached with the third carbon. Then again the phosphate molecule of next nucleotide will be attached with the third carbon of previous nucleophile. तो bond जो बनता है that is between the phosphate molecule of next nucleotide to the third carbon of previous nucleotide. This is faster bond. And why it is called phosphodiester bond? इसको phosphodiester bond क्यों कहते हैं? Then see, when phosphate molecule attached with one carbon, that is fifth carbon, then that is called phosphoester. And in this, the phosphate molecule is two carbon. Fifth carbon of previous pentose sugar and third carbon of next pentose sugar. So it is
phosphodiester. So remember this phosphodiester bond. Now see, when the chain will be formed, जब चेन बनता जाए इसके नीचे नीचे आकर के अटैच होता जाएगा, so at the last after chain formation you will find that its one end the phosphate molecule will be free. इसके एक एंड पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कुछ है नहीं अटैच होने के लिए, एंड वन एंड पे थर्ड कार्बन कंटेन OH. बाकी सारे बीच में जितने होंगे यहाँ नहीं दिया है. इफ यू विल अटैच इन द सेम वे, इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड 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 अटैच करते जाएंगे, देन यू विल फाइंड दैट in this chain at the one end the phosphate molecule will be free, that will be not attached with any other, and at another end the pentose sugar third carbon is free, that will hide group, that will not attach. वो अटैच नहीं होगा. जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा OH होगा, वो आगे किसी से अटैच नहीं होगा. जो फर्स्ट वाला नहीं होगा उसका फॉस्फेट मॉलिक्यूल किसी से अटैच नहीं होगा, दैट विल बी फ्री. सो दैट एंड ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में दैट एंड वेयर द फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज फ्री एट फिफ्थ कार्बन, जो फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल दैट विल फ्री, दैट इज कॉल्ड 5' एंड. उसको कहते हैं 5' एंड. एंड दैट एंड of polynucleotide chain where the third carbon of pentose sugar is not attached, that is attached with OH, not attached with another nucleotide, means that will attach with OH. तो कहा जाता है कि जिस साइड पे, जैसे हमने एक चेन बना लिया, so in this chain both the side will be not similar, दोनों साइड सिमिलर नहीं होंगे. How you can see on the screen, दोनों साइड सिमिलर नहीं होंगे. अगर इफ वी विल ड्रॉ दिस चेन, तो इसके एक साइड पे जो सबसे ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है इसका फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा, दैट विल बी फ्री. और जो सबसे लास्ट में आएगा उसका थर्ड कार्बन पे OH रहेगा, दैट विल बी नॉट अटैच. सो दैट साइड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड chain, that end of polynucleotide chain where the for molecule at fifth carbon is free, that is called 5' end. And that end of polynucleotide chain at which the third carbon of pentose sugar is having OH, pentose sugar के तीसरे कार्बन पे OH रहेगा, means that will not attach. So that is called 3' end. Means a polynucleotide chain is having two. One is is the meaning of 5' end and 3' end. 5' end is showing that at this side the phosphate molecule present at fifth carbon is free, that is not attached, and 3' end is showing that at this side the third carbon of pentose sugar is attached with OH, attached with OH. So this is the meaning of 5' end and 3' end. Means you can't say कि किसी को किसी साइड कर दीजिए, नहीं, 5' end और 3' end होता है. So now another information, हमने शुरू किया था न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में हमने कंपोनेंट को देखा. पहले पेंटोज सुगर नाइट्रोजनस बेस अटैच होकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, देन न्यूक्लियोसाइड में फिर फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है, न्यूक्लियोटाइड अटैच है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ फाइनली फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड. तो हमारा यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयार हो गया. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप. एसिड दो टाइप का होता है, एज यू नो. is another is a nucleic acid is of two type. One is DNA, another is RNA. न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो टाइप का होता है, DNA, RNA. फ्रॉम क्लास 9th 10th.
कि डीएनए एंड आरएनए. सो वन क्वेश्चन विल बी हियर फ्रॉम बायो. एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बायो से रहेगा, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए. सो डिफरेंस आई थिंक यू नो वेरी वेल. आपको डिफरेंस पहले से पता है कि डीएनए फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए फुल फॉर्म इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड. इन डीएनए, डीएनए में क्या होता है, इन ribose pentose sugar is present. In RNA ribose pentose sugar is present. डीएनए में deoxyribose pentose sugar होता है, RNA is having ribose pentose sugar. Another, in डीएनए, डीएनए में AGC 4 nitrogenous base are present, adenine, guanine, cytosine, thymine. In RNA, in RNA में 4 nitrogen bases are present, but at the place of thymine, uracil is present. थाइमिन के जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है. सो 4 nitrogenous bases are present in DNA, adenine, guanine, cytosine and thymine, and 4 nitrogenous bases are present in RNA, adenine, guanine, cytosine and uracil. So which of the nitrogen डीएनए बट नॉट प्रेजेंट इन आरएनए. कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में नहीं होता है. देन यू विल से थायमीन. एंड विच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. सो दैट विल बी यूरेसिल. एंड if question will be there, which nitrogenous base present in the RNA at the place of thymine. थायमिन के प्लेस पे आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, दैट विल बी यूरेसिल. maybe question will be there, in RNA uracil is present at the place of which nitrogenous base which present in DNA. so that will be thymine. कि यूरेसिल आरएनए में किसके जगह पे आता है, थायमीन के जगह पे. so another information, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. डीएनए जो होता है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है. एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. एंड डीएनए इज नॉट हैविंग एनी टाइप. डीएनए का कोई टाइप नहीं होता है. एंड आरएनए इज हैविंग 2 टाइप्स, सॉरी 3 टाइप्स, mRNA, rRNA एंड tRNA. मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टी यानी ट्रांसफर आरएनए. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड मींस डीएनए एंड आरएनए. डीएनए इज स्टैंड फॉर deoxyribose nucleic acid. RNA stand for ribose nucleic acid. DNA is having deoxyribose pentose sugar. RNA is having ribose pentose sugar. DNA is having 4 nitrogenous base, adenine, guanine, cytosine, thymine. RNA is having 4 nitrogenous base, adenine, guanine, cytosine, and uracil. DNA is not having uracil nitrogenous base. RNA is not having thymine nitrogenous base. DNA is not having any type. RNA is having 3 types: mRNA, rRNA, tRNA. DNA is double stranded. RNA is single stranded. Means DNA made up 2 polynucleotide chain. RNA made up just 1 polynucleotide chain. Now, another information. अब दूसरा इंफॉर्मेशन देखिए. यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछेगा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. आपके में डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज एक्सप्लेन helix model of DNA. Which model is explaining the DNA structure? That is a double helix model of DNA. Double helix model of DNA. The structure of DNA is explained by a model that is called double helix model of DNA given by Watson and Crick. दिया किसने था, वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक. डबल हेलिक्स
मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो ये पूछेगा कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और मे बी द क्वेश्चन विल बी देयर explain the structure of DNA on the basis of double helix model of DNA और explain the double helix model of DNA। कुछ भी तरीके से पूछेगा डीएनए का स्ट्रक्चर, then you need to write this। Now according to this model, first of all this model is given by Watson and Crick। according to this model, according to this model, ध्यान से देखिए, all the points you need to write by yourself here। First one, DNA is made of two polynucleotide chain। फर्स्ट जो सामने आपको दिख रहा है बस वही देख के बोलना है, सारा कुछ इस स्ट्रक्चर में है। डीएनए इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट, these polynucleotides chains are in helical coiled with each other। ये polynucleotide chain helical हैं, हेलिकल मैनर में एक दूसरे से क्वाड्रेट इज कॉल्ड हेलिक्स मॉडल। नंबर नेक्स्ट, इन दिस helical model both the polynucleotide chain present in DNA are anti-parallel to each other or anti-directional to each other or opposite to each other। Means if you will see here, one chain is running from 5' into 3' end, then another chain is running from 3' into 5' end। सो एक अगर ऐसे है तो सेकेंड वाला ऐसे, मीन्स एंटी पैरेलल और अपोजिट टू ईच अदर। इन दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द बोथ polynucleotide chain of DNA are opposite to each other, anti-parallel to each other, means one is moving in the direction from 5' to 3', then another is moving in the direction from 3' to 5'। Now another information, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लुक्स लाइक द लैडर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो होता है वो सीढ़ी की तरह दिखता है। इन दिस द बैकबोन ऑफ डीएनए, मीन्स जो ये लाइन बनी हुई है, this backbone of DNA is made of pentose sugar and phosphate molecule। The backbone of DNA is made of pentose sugar and phosphate molecule, while nitrogenous base are present between these two nucleotide chain and help them to join together। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, इस मॉडल में इट हैज बीन फाइंड दैट द मेन चेन दैट इज बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड ऑफ, आपको पता है डीएनए में तीन चीजें होती हैं, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, पेंटोज सुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजिनस बेस। सो नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस दिख रहा है, वेयर इज द पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल? pentose sugar and phosphate molecule is in this। So backbone of DNA is made of pentose sugar and phosphate molecule, and its nitrogenous base is attached transversely between two polynucleotide chain to connect them together। जैसे सीढ़ी में दो बांस होते हैं, दो बांस के डंडे होते हैं, एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय, ठीक है, दिस ट्रांसवर्स पीस ऑफ वुड दैट इज, जिसको हम कहते हैं कि उसकी क्या है, लैडर की डंडियां हैं, ठीक है। सो इन द सेम वे one chain is this main backbone is made of pentose sugar and nitrogenous pentose sugar and phosphate molecule, and the nitrogenous base is present transversely to connect or to hold both the polynucleotide chain। दोनों polynucleotide chain को ये होल्ड किए रहता है।
What is hold the two polynucleotide chain in DNA? The two polynucleotide of DNA are held together by the nitrogenous bases. And how nitrogenous bases are attached with each other? नाइट्रोजिनस बेस एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं? सी, you can see this middle one bond. This is hydrogen bond. So क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए. This one is one chain of polynucleotide. This one is another polynucleotide chain. In this, the nitrogenous bases are present in this way. In this, nitrogenous bases are present in this way. Now, how these two nitrogenous bases are connect with each other? So that connection is hydro. वो connection क्या होता है? Hydrogen bond. So the question is there कि which bond is connect the nitrogenous bases of two polynucleotide chain of DNA. DNA के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजिनस बेस को कौन आपस में कनेक्ट करता है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. Remember this. So which bond is present here? See, which bond is present here? Hydrogen bond. And the quantity of hydrogen bond. See the quantity of hydrogen bond. That if you will see between G and C, means between guanine and cytosine, 3 hydrogen bonds are present. गुएनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं? 3. And between adenine and thymine, how many hydrogen bonds are present? Then 2. Remember this information. In the DNA, between guanine and cytosine, 3 hydrogen bonds will be between adenine and thymine. ठीक है, 2 hydrogen bonds are present. It has been observed by the scientists that between guanine and cytosine, 3 hydrogen bonds are present. Between adenine and thymine, 2 hydrogen bonds are present. So remember this information. Another information, in the DNA, adenine always attached with thymine, and thymine always attached with adenine, and guanine always attached with cytosine attached with guanine. Means there is no any condition that cytosine can attach. कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि जिसमें साइटोसिन कैन अटैच एडेनिन और थाइमिन एंड गुएनिन कैन अटैच एडेनिन और थाइमिन. कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं कि गुएनिन एडेनिन थाइमिन में से किसी से अटैच हो जाए या साइटोसिन एडेनिन थाइमिन से. ऑलवेज एडेनिन अटैच विथ थाइमिन और थाइमिन अटैच विथ एडेनिन, एंड गुएनिन attached with cytosine and cytosine attached with guanine. Remember this information. So A always attached with T, T always attached with A, and G always attached with C, C always attached with G. But the between B and C will be triple bond, and that is a triple bond means 3 hydrogen bond, not triple covalent bond, 3 hydrogen bond, and between adenine thymine is 2 hydrogen bond. So now once again I am going to repeat all the double helix model. So question will be there, explain the double helix model of DNA. Double helix model of DNA was given by Watson and Crick. According to this model of DNA, first number, DNA is a double stranded structure made of 2 polynucleotide chain. Next, the two polynucleotide chains are run opposite to each other, means parallel to each other, means one is run from 5' into 3' end and another is running from 3' into 5' end. Another, in DNA structure, the backbone of DNA is made of pentose sugar and phosphate molecule, while nitrogenous bases are attached transversely between 2 polynucleotide chain. The
bases of two polynucleotide chain are attached with each other by hydrogen bonds. Nitrogenous bases of two polynucleotide chain which bond hydrogen. Next, in DNA, adenine attached with thymine. Thymine always attached with adenine. Guanine always attached with cytosine. Cytosine always attached with guanine. A to T, T to A, G to C, C to G. Next, in DNA, the two hydrogen bond is present between the adenine and thymine, and three hydrogen bonds are present between the guanine and cytosine. Guanine and cytosine. Another information, in DNA, the number of adenine is and number of guanine is equal to cytosine. As you can see कि एडेनिन थायमिन से अटैच हो रहा है और गुआनिन साइटोसिन से अटैच हो रहा है. सो नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन. अगर 50 एडेनिन है तो 50 थायमिन होगा, क्योंकि जितने एडेनिन है वो थायमिन से अटैच हो रहे हैं. एंड नंबर ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन. जितने गुआनिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे. Remember this. So now this is the double helix structure of DNA. Screen and voice both are clear now? Anyone please? Hello? Yes, sir, clear. Okay. So this is about the double helix structure. You can see here it is written two strands are complementary each other because hydrogen bonds are formed between the specific pairs of bases. So now Sargaf's rule. Sargaf's rule is not given in your NCRT, but I want to discuss this here. That's why I had taken. To just the topic which I had, that the amount of A is to T and amount of G is to C. को बता रहा था कि amount of A, adenine always pair with thymine, so A is always, guanine always pair with cytosine, so G is always equal to C. ये मैंने किसके थ्रू बताया? सरगॉफ रूल के थ्रू. इससे एक और इंफॉर्मेशन आया कि आपको बताया गया है इन nucleotide or nucleic acid, two types of nitrogenous bases are present, purine and pyrimidine. So in any DNA, ठीक है, चाहे वो किसी का भी DNA हो, in any DNA the number of purine nitrogenous base is always equal to number of pyrimidine nitrogenous base. Why? क्योंकि अभी आपको बताया गया जितना A होगा उतना T होगा और जितना G होगा उतना C होगा. Means in another way you can say A plus G is equal to C plus T. जितना A होगा उतना T होगा, जितना G होगा उतना C होगा. Means A plus G is equal to C plus T, and AG is purine, CT is pyrimidine. So in another way we can say in any DNA or DNA of any organism, the number of purine base is always equal to number of pyrimidine base. This is Sargaf rule. The number of purine base is always equal to number of pyrimidine base. Possible because A always attached with T, so number of A is equal to number T, and G attached with C, so number of C.
So we can say number of purine base is always equal to the number of pyrimidine. This is the last topic of this chapter. So once again हम लोगों ने शुरू किया था न्यूक्लिक एसिड कर लीजिए डिफिकल्ट टॉपिक. सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? दैट इज द पॉलीमर ऑफ, right? It present the nucleons play an important role. It attack and in synthesis of protein. Nucleic acid के nucleic acid, the monomer of nucleic acid is nucleotide. It is made of three component: pentose sugar, nitrogenous base, phosphate molecule. Pentose sugar में ribose deoxyribose में क्या difference है? That I had discussed yesterday. Nitrogenous bases कितने टाइप के होते हैं? So these are type pyrimidine, purine. pyrimidine में C2 CTU, purine में AG, adenine and guanine. Then structure of all nitrogenous bases. Then after nucleoside क्या होता है? Which bond is present between nitrogenous base and the first carbon of pentose sugar? And nucleotide क्या होता है? Which bond is present between the fifth carbon of pentose sugar and phosphate molecule? And now the two nucleotides are combined together by which bond? That is phosphodiester bond. And when nucleotides are attached with each other to form the polynucleotide chain. Polynucleotide chain is having two end. One is 5' end, another is 3' end. What is meaning of 5' end? 5' end is that end of polynucleotide chain at which the fifth carbon of pentose sugar contain phosphate molecule which is free, not bonded. And the what is the meaning of 3' end? That end of polynucleotide chain in at which the third carbon of pentose sugar is having OH group, hydroxyl group. Then double helix model of DNA, and then after types of nucleic acid, difference between DNA, RNA, types of RNA, and then after